और जो है और sludge, it about 5% of sludge may form carcinoma. अब मुझे सही याद go on to form gallbladder gallstones, ठीक इस तरह कुछ है, लेकिन 5, 10, 15 याद करें. 15% porcelain gallbladder can progress to GB carcinoma, and 5 to 10% pylori tumor may have malignant degeneration. Number 11, 55-year-old man, his medications are aspirin, bisoprolol, digoxin, furosemide, and metformin. तो यह जो digoxin है तो ये gynecomastia cause कर सकता है. Mammography shows a triangular area of subareolar granular tissue that points towards the nipple. ठीक है, most likely diagnosed gynecomastia due to digoxin therapy. ठीक है. ठीक है, तो ये क्या मेल है, तो मेल में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम सस्पेक्ट कर सकते हो, तो बंदा सोचता है कि ड्रग्स दिया है, डाइग्नोसिस दिया है, तो उसको कहना है मैसेज काफी होगी. क्वेश्चन नंबर 12, mammogram shows a round well circumscribed mass measuring 3 cm in diameter of mixed density with a model center reported as having a slice of solid appearance. ठीक है, slice of appearance है तो surgery in the right upper outer corner of the breast. The mother is surrounded by a thin smooth pituitary capsule and has a halo sign. MRI shows a well-circumscribed round legend with a pseudocapsular demarcation containing a mixture of low, intermediate, and high signal intensities on T1 variant sequences and corresponding high and intermediate signal intensities on T2 variant images. Most likely diagnosis hematoma of the breast. ठीक है, या दूसरा नाम है फाइब्रोअडेनोमा लाइपोमा है. ठीक है, बस ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो इमेजेस की अच्छी सी ये टॉक्स में आते हैं, इसलिए लेजन है. ठीक है, स्लाइड ऑफ सॉज अपीयरेंस है, आउटर कैप्सूल है, और इनर जो है फैटी कंटेंट भी है, और जो है वही जो एमसीक्यू में कह रहा है एग्जैक्टली. देखो ये टॉक्स में आते हैं, इसलिए मैं कहूँगा राउंडेड वेल सर्कमस्क्राइब्ड मास मेजरिंग 3 cm diameter. ठीक है, मिक्स डेंसिटी विद अ मॉडल सेंटर रिपोर्ट हैविंग स्लाइस ऑफ साइज अपीयरेंस. ठीक है, स्लाइस ऑफ साइज लिखते तो ये साइन फिर इससे मार्क मिल जाते हैं, साइड स्लाइस ऑफ साइज अपीयरेंस. और फिर जो है मास इज सराउंडेड बाय थिन स्मूथ कैप्सूल हैज अ हैलो साइन. ठीक है, तो ये ठीक है. हाँ तो आसान है. ठीक है, क्वेश्चन 13, which of the following features would favor a diagnosis of galactosile above that of a cold abscess of the breast. ठीक है, a lesion of mixed density on mammography with a fat fluid fat water level on a horizontal beam view. ठीक है, the fat water level जो galactosile में नजर आती है. ठीक है, it favors galactosile then over above breast abscess. ठीक है, और ये फैट वाटर लेवल ना, देखो ये फैट वाटर लेवल galactosile की नजर आ रही है, ये फैट से ये वाटर लेवल, तो ये galactosile में टिल्ट नजर आता है. और जो है फिर लेजन ऑफ और यार साउंड पर galactosile. अच्छा तो अच्छा फिर ये कि क्वेश्चन नंबर 13 इसकी दूसरी ऑप्शन देखते हैं ताकि जो. अच्छा ये रेट्रोएंगुलर लोकेशन नहीं है galactosile में, एनीक्वेक एनीक्वेक भी नहीं है. ठीक है, लिम्फ नोड्स भी नहीं है उसमें, बस फ्लैट वाटर लेवल याद रखें galactosile नजर आता है. क्वेश्चन नंबर 14, to which age range does the National Breast Screening Program UK currently offer material for screening 50 to 70 years. बस इतना याद करें कि जब ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग शुरू करती है तो 50 ईयर्स से स्टार्ट करती है और फिर 70 ईयर्स तक जाती है. ठीक है, 50 to 70 ईयर्स टिपिकल है. Question 15, which initial views are recommended in the screening mammography? Craniocaudal and MLO view, mediolateral oblique view. ये हम रोजाना करते हैं वार्ड में. ठीक है, craniocaudal and MLO view. Question 16, woman underwent a left mastectomy. ठीक है, MRI shows a circumscribed area of mildly hyperintense signal on T1 sequences, which is hyperintense on T2 sequences and hyperintense on a water suppressed third sequence. Contrast enhancement was seen in the surrounding parenchyma on enhanced T1 sequences. ठीक है, ये यहाँ पर हिंट है कि अंडरवेंट लेफ्ट मस्टेक्टमी. ठीक है, अच्छा फिर थिकनेस की तरफ इशारा करें तो मतलब इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा है, लेकिन इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा. Question number 20, which finding would be in keeping with an extraorbital rupture of silicon gel filled implants? Storm sign posteriorly ultrasound. ठीक है, extracapsular rupture, snowstorm sign. Intracapsular rupture, step ladder sign on ultrasound. ठीक है, extracapsular rupture, snowstorm sign on ultrasound. Intracapsular rupture, step ladder sign on ultrasound. ठीक है, इमेज देखो ये step ladder sign on ultrasound, intracapsular rupture. ठीक है,
ये है इंटरकैप्सुलर रप्चर, लिंग्विन साइन भी कहते हैं, होती है इसमें, ठीक है, लिंग्विन साइन, ठीक है। फिर एक्स्ट्राकैप्सुलर रप्चर, स्नोस्टॉर्म साइन, एक्स्ट्राकैप्सुलर रप्चर, स्नोस्टॉर्म साइन, एक्स्ट्राकैप्सुलर रप्चर। Question number 21. Patient is diagnosed with moderate disease. What treatment would be most appropriate? Symptomatic treatment only, ठीक है। Moderate disease क्या होता है? Moderate disease में ये होता है कि moderate disease is a rare benign breast condition characterized by some mobilities of the subcutaneous veins of the breast and anterior chest wall. Can also occur in axilla when it is called axillary web syndrome or the अच्छा moderate disease में होता है कि is a benign condition and with there's some mobilities of the subcutaneous veins, ठीक है। तो इसमें only symptomatic treatment करते हैं, benign condition है। Question number 22. Mammography shows multiple long needle-like dense calcifications oriented with their long axis pointing towards the nipple. What is the most likely diagnosis? Plasma cell mastitis, ठीक है। ये इसकी डायग्राम भी अच्छे से है, ये भी टॉक्स में आ सकता है। देखो mammograms of multiple long needle-like dense calcifications oriented with a long axis pointing towards the nipple. Diagnosis plasma cell mastitis, ठीक है। Question number 23. Solitary mass in the upper outer corner of the right breast. Perhaps see hemorrhagic metastasis. What is the most likely primary? Choriocarcinoma, ठीक है। 23 की वजह यह है कि जो है choriocarcinoma is the most common hemorrhagic metastasis to the breast. ये तो याद करें। Hemorrhagic metastasis means choriocarcinoma. Hemorrhagic metastasis means choriocarcinoma. Hemorrhagic metastasis to the breast means choriocarcinoma. Explain पर तो वही आएगा 23. Malignant melanoma, renal cell carcinoma, and Kaposi sarcoma would be other possible primaries, but most common hemorrhagic metastasis to the breast, choriocarcinoma. Question number 24. A woman has been proven, she has been proven to be ovulating, ठीक है। Heterocytogram demonstrates a uterine abnormality. Most likely diagnosis, septic uterus. वजह क्या है कि septic uterus is the most common condition of the uterus present, ठीक है। 90%, it shows 90% abortion rate, and I think इसमें history में थी abortion थी 24. Sorry. A 26-year-old patient and her partner are being rescued for infertility. His semen analysis is adequate, ठीक है, and she has been ovulating. She undergoes hysterosalpingogram which demonstrates uterine abnormality. Most likely diagnosis, क्या था? Septate uterus, ठीक है। Septate uterus is 90% associated with infertility or abortion rate. So diagnosis septate uterus है। Question 25. Patient has cervical carcinoma. What finding on MRI? What finding on MRI is most reliable in excluding parametric invasion? Hyperintense stream of cervical stroma, ठीक है। Hyperintense stream of cervical stroma मतलब ये कि cervix के बाहर कुछ इन्वेड नहीं हुआ, cervix के इर्द गिर्द नॉर्मल cervical stroma है, तो ये है it excludes parametric invasion. अगर cervical carcinoma की एक स्टेज देखते हैं तो cervical carcinoma, ठीक है। फिर hyperintense or T2 sequences and hyperintense on water supply sequences, ठीक है। Now, spontaneous was seen in the spontaneous tissue. Parenchyma and NHT1W sequences. What are these findings most likely to represent? Post-surgical seroma, ठीक है। इसमें hints underwent left mastectomy है, hypertension on T2 sequences, lesion है, मतलब उसमें fluid होती है। इसमें तो वो पढ़ते हैं, explanation तो जल्दी से हो जाएगी। 16. Silicone will appear hypertense on water supply sequences. The appearance are consistent with localized collection of serum after surgery, ठीक है। बस ये हिस्ट्री से बंदा हिंट लेते हैं कि अंडरवेंट लेफ्ट मस्टेक्टोमी और फिर जो है एमआरआई पर
hypertension on T1 very mild hypertension on T1 और फिर hypertension on T2 तो कोई fluid है and hypertension on water suppressed image यानी water नहीं तो कोई fluid edematous fluid होगा और फिर contrast enhancement seen surrounding parenchyma मतलब कोई healing poses है तो इसलिए contrast enhancement in the surrounding parenchyma on enhanced T1 with तो diagnosis post-surgical seroma. Question number 17. A radial scar of the breast. ठीक है, which of the following statements is most accurate? Surgical excision is required for a definite diagnosis. ठीक है, यहाँ पर बस इतना याद करें कि अगर radial scar of breast में तो we have to do surgical excision for a definite diagnosis. ठीक है, मेरे ख्याल में इसकी साइज एक्सपैंड हो रही है हिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो 51-year-old woman attends for mammography screening for the first time. Apparently seen in the right breast and she is recalled for further views and assessment. Ultimately, she is found to have a radical scar of the breast, ठीक है, and she is 51 years old. Which of the following statement is most accurate? तो ये है कि surgical excision required for a definite diagnosis. There is no association with trauma or previous trauma, ठीक है, और scar है, तो मतलब most likely कोई malignant growth हो सकती है अगर trauma की वजह से नहीं है. Is variable appearance in different projections. No skin thickening or retraction is seen. Frozen section, collier, biopsy, or final apparent should be avoided. It is rarely palpable and is usually detected at screening. Mammography or occasional mastectomy specimen. ठीक है, तो ये रटा करें अगर radial scar is seen in the breast with no history of trauma, surgical excision is required for diagnosis. A radial scar is seen in the breast with no history of trauma, surgical excision is required for definite diagnosis. Question number 18. A 3-month-old history of bloody discharge from the left breast. On examination, there is an erythematous scaly rash involving the left nipple and areola with areas of ulceration. ठीक है, ये जो erythematous scaly rash है ये Paget disease की निशानी है. ठीक है, and Paget disease may lead to cancer carcinoma. Retraction of the left nipple is noted. फिर ये भी malignant change है. फिर with the patient report as of with the patient report recent onset. What is the risk of esophageal malignancy? ब्रेस्ट में सबसे कॉमन डक्टल कार्सिनोमा in 60% of cases होती है. ठीक है, ब्रेस्ट में सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है? डक्टल कार्सिनोमा in 60% of cases. ब्रेस्ट में मोस्ट कॉमन कैंसर डक्टल कार्सिनोमा in DCIS. ठीक है, in 60% of cases. Question number 19. Mammography shows diffuse increase in the density of the right breast, which displays a coarse reticular pattern with prominent Cooper ligaments and skin thickness of 1.8 mm. Most likely cause inflammatory carcinoma. ठीक है, इसमें ये हिंट है कि there's कोर्स रेटिकुलर पैटर्न. ये भी अगर नहीं समझे आए तो प्रोमिनेंट कूपर लिगामेंट एंड स्किन थिकनेस और 1.8 mm. जब भी इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है तो उसमें हमें स्किन थिकनेस हो जाती है और कूपर लिगामेंट जो होती है प्रोमिनेंट हो जाती है. जैसे कोई हीलिंग प्रोसेस है, कोई इन्फ्लेमेशन हो तो मोस्ट लाइकली कॉज इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा. ठीक है, ट्रैक्ट ये हेड्स पॉइंट बना पिकअप कर ले तो बस डायरेक्ट इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा की तरफ निशानी. वरना हमें तो याद है कार्सिनोमा में तो सिर्फ मास होती है और उसमें कैल्कुलेशन होती है, फिर निपल रिट्रैक्शन होती है, स्टार शेप्ड होती है, मतलब इरेगुलर शेप होती है. उसमें अगर स्पेसिफिकली जिक्र करें कि प्रोमिनेंट कूपर लिगामेंट और